Ma'am, coming to the interview that we were having, you just said that the policy should not be piecemeal. And there should be a very rigorous policy that basically consider the overall strategizing. So in that sense, can you tell us about, as an expert, what do you think is the right process for testing, for quarantine, and whatever you think is the right strategy? Can you put it out specifically for us to understand? जी जी थैंक यू मदिया मेरी समझ में ये आता है मदिया बेस्ड policy of response depends basically on your own country's systems and constraints and challenges. So depending upon that, the country has to determine कि हमारा जो central pillar है of this response वो क्या होना चाहिए. It also depends on what stage of the epidemic the country starts to puts its systems together. Since we have come to the response a little bit late, I think that we should and from the experience that we've had, कि कैसे disease जो है वो मुल्क के अंदर spread हो रही है from these people who are going back to their homes. I think what is very important is that we institute rigorous testing. उसका ये फायदा होगा कि एक तो आपकी डिटेक्शन हो जाएगी लोगों की, दूसरा आपकी सर्वेलेंस हो जाएगी. You will know where the hot spots are, where the majority of the people are, and based on that you will then be able to segregate people. So people who are testing negative at that point, you will be able to segregate them, and people who are positive then basically need isolation. So people will need, उससे आपको पता चलेगा that number of people need to be quarantined and number of people need to be isolated. So वो जो है वो होनी चाहिए, और वो कितने लोगों की होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वो that is should be left to the experts. But I do feel that testing, people should not be brought into the city for testing. This testing should go out into the rural areas and into the districts and into the tehsils for that testing to be done. That can also be set up with the help of experts जो कि laboratory experts हैं. So testing से जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपको quarantine करने की ज़रूरत है और आपको isolation करने की ज़रूरत है, those two things are very separate. Quarantine is done for people who are basically healthy, and we put them alone and separate from the rest of the population to find out that in a certain number of days they will become sick. Those people also need care and those people also need monitoring. ठीक है, मगर वो जरा lower level की है, requiring a little less skilled person. I saw a video of a person who was complaining कि मैं quarantine में और मुझे कोई डॉक्टर देखने नहीं आया. उस शख्स को तो डॉक्टर के देखने की जरूरत नहीं है, मगर किसी को तो उसको देखने की जरूरत है ना, कि उसको चेक करने की. So protocols need to be set up that people who are in quarantine, उनको किसने देखना है, नर्स ने देखना है, लेडी हेल्थ विजिटर ने देखना है, और उनका क्या क्या चेक करना है, 2 दफा दिन में टेम्परेचर चेक करना है कि 4 दफा करना है. So that system needs to be set up. The second thing is that people who need isolation means that these people are sick, they need to be isolated, they are tested positive. Uski alag protocols hain, because you expect the disease to progress, either become worse or become this person will become better. उसके लिए भी आपको केयर और नर्सिंग केयर की जरूरत है और सेपरेट आइसोलेशन करने की जरूरत है. वो कहाँ होगी? अगर वो भी आप टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में करने लगे हैं तो आपके हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म हो जाएंगे. सो आई वुड अगेन सजेस्ट दैट शुड आल्सो बी डन closer to people's homes. We have tehsil hospitals, we have district hospitals where that can be done. But those hospitals need to be made functional, and people over there, जो nursing care staff है, they might not be actually qualified nurses, but nursing care staff can be trained to do that. Finally, आपके पास tertiary care hospitals हैं, which should really be protected, because people who become very sick and they need infectious disease specialists and they need sophisticated equipment, only those people should come to these tertiary care hospitals. Not like this कि हर शख्स जो है वो आ जाए वहाँ पे. तो अभी भी आपके हॉस्पिटल्स जो हैं वो ओवरवेल्म होने शुरू हो गए हैं, उनके पास प्रोटेक्टेड इक्विपमेंट नहीं है, उनके पास जो है वो सप्लाईज नहीं है. और ये जो इशू वेंटिलेटर्स का है वो बिल्कुल सही है कि वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है. वेंटिलेटर्स इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल piece of equipment when people become sick. From all data, it seems that just about 5% of the people who get the infection
Out of those, about 5% will need very critical hospital care and ventilators. So, Magar, given the number of population that we have, and given the way this virus is replicating in Pakistan and it's growing in Pakistan, in another 4 weeks, those numbers will again become very large. That आपके पास अगर 2000 वेंटिलेटर्स हैं या 3000 वेंटिलेटर्स हैं तो वो भी काफी नहीं होंगे, क्योंकि at the same time other people who need ventilators are also standing in line. ठीक है ना, बाकी जो लोग जिनको किसी और वजह से वेंटिलेटर्स की जरूरत है. So I personally think that focusing all our energies on getting ventilators, importing ventilators is not where all our energy should be put, because ये ventilators जो हैं ये लगाएगा कौन, इनको सेटअप कौन करेगा, इनको ऑपरेट कौन करेगा. आपकी जो सबसे क्रिटिकल चीज है वो ह्यूमन रिसोर्स की शॉर्टेज है in every area. Even people who set up ventilators, people who set up labs, people who are be working in labs, nurses, doctors who are providing care. So that you have to keep in mind कि वो इतनी sophisticated चीज अगर आपके लिए करना मुश्किल है, तो कम से कम जो quote unquote ऐसे जो थोड़ी आसान बातें हैं वो करनी बड़ी सख्त जरूरी है. अभी कल परसों ये भी आया था इसमें न्यूज में कि कोई डॉक्टर है, उन्होंने ये पंजाब गवर्नमेंट के साथ वो बात कर रहे हैं कि भाई ये जो प्लाज्मा को जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उनके प्लाज्मा को हम री इंजेक्ट करें इन पीपल, एंड पीपल आर वेरी एक्साइटेड, वो तालियां बजा रहे हैं. वो ठीक है, वो बड़ी अच्छी बात है, ऐसी चीजें जरूर होनी चाहिए जो ट्रीटमेंट है, मगर आप ये दिमाग में रखें कि वो करने के लिए भी आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा ना डिजीज को. यू हैव टू फाइंड आउट हु आर द पीपल हु हैव द डिजीज. So detection through testing is very crucial. And I will come back again to this and say कि ये piecemeal नहीं होना चाहिए कि अच्छा हम यहाँ टेस्टिंग करें, अच्छा वो करें. It has to be an integrated response. इस रिस्पॉन्स में जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी करनी जरूरी है, मगर वो करना इस तरीके से करनी चाहिए which matches the cultural and traditional practices of your society. आपकी सोसाइटी की एक सर्टेन प्रैक्टिसेस हैं, जब लोगों को समझ आएगी और उनको वो पता चलेगा तो वो खुद करेंगे. जबरदस्ती और मुश्किल तरीके से कराने से इट इज लाइकली टू बैकफायर. दूसरा ये कि ये सोशल डिस्टेंसिंग एक खास टाइम पे इन द लाइफ ऑफ द एपिडेमिक क्रूशल होती है. अभी भी खैर जरूरी है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, मगर सिर्फ इसके ऊपर बैंक करना कि हम वो कर दें वो बहुत वो है difficult, क्योंकि you also have to watch out for the population that will lose its job and will sit at home. और आपको ये भी पता है कि हमारे बाकी के systems भी जो हैं, distributing food, taking care of people who are sitting at home, providing mental health services, क्योंकि ये बड़ा stressful होता है. We have to keep in mind that for people to practice social distancing is not easy, especially जो traditional cultural societies होती हैं उसमें बहुत मुश्किल होता है. तो ये सारे पीसेस आप इकट्ठे करके और बना लें और पूरा उसका वो कर लें और सब पीस इकट्ठे काम कर रहे हो तो फिर ठीक है. सो मगर ये है कि पीस मील करना और एक चीज के ऊपर बैंक करना और फिर उसको ड्रेकोनियन तरीकों के साथ करना इज नॉट गुड. द पॉपुलेशन नीड्स टू बी गिवन इंफॉर्मेशन. दे नीड टू बी गिवन करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड फेयर इंफॉर्मेशन, मतलब छुपाने की जरूरत नहीं है. दूसरा मैं ये समझती हूँ कि गवर्नमेंट के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आपकी भी अपनी इंटरनल एजेंसीज जो हैं, जो कोई इम्प्लीमेंट कर रही है, कोई कुछ कर रही है, उनमें भी कोई कोहेरेंस और कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, सो दैट पीपल अंडरस्टैंड हु इज एक्चुअली इन चार्ज, who is giving us information. अब कल से जो है वो असद उमर जो है वो उसकी बात कर रहे हैं. I understand he is the Minister of Planning and Development. So, but still there is a lot of confusion उस सेंस में. तो ये है बेसिकली. और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑपरेशंस हैं उसकी मैं बात कर दूं, देखें 25% अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आ रही है उससे पता चल रहा है कि 25% ऑफ द पीपल आर एसिम्प्टोमेटिक. उनको वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं मगर उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते. ठीक है, तो दैट ऑल्सो नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हेन यू आर टेस्टिंग, क्योंकि जो वो लोग जो हैं वो टेस्टिंग से ही पता चलेंगे ना. सो ये टेस्टिंग का होता है. डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑपरेशंस. जी सॉरी मैम, आप बस 2 minutes में can you sum up the discussion and highlight the role of expert and also institutions like PIDE and expert like yourself in the process. Thank you. जी.
दो चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में इसको कंट्रोल करने का एफर्ट हमें डिसेंट्रलाइज करना बहुत जरूरी है. I think that the operations should be moved out into the district hospitals, tehsil hospitals, district administration, district level health staff, district level paramedical staff should be utilized. और दूसरी चीज जो है कि रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक पाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक पाइड में इकोनॉमिक एक्सपर्टीज है एंड डेटा एनालिसिस एक्सपर्टीज है, and I think that the government should take PIDE in confidence and share their documents with PIDE. PIDE में there are people, I'm affiliated with PIDE. हमारे जैसे लोग जो हैं जो कि बहुत इनको experience है public health का for many years. We should be allowed, and we should be allowed to look at the government's plans. क्योंकि गवर्नमेंट खुद कहती है कि हमारे पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, हमारे पास इतना ये नहीं है, हमारे पास इतना वो नहीं है. नहीं है, वाकई नहीं है. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज नॉट अ वेरी रिच गवर्नमेंट, नॉट अ वेरी रिसोर्स रिच गवर्नमेंट, नॉट अ वेरी टेक्निकली रिच रिसोर्स उनके पास टेक्निकल नहीं है. तो जब इस तरह के लोग हैं तो उनको शेयर करनी चाहिए प्लान्स. एंड ये डिस्कशंस जो गवर्नमेंट हमारे साथ करते हैं और हमें इंफॉर्मेशन देते हैं इज फाइन, but unless we look at concrete plans and we can weigh in on them and say कि हाँ जी ये ठीक है, ऐसी है चीज ठीक है, ये ऐसी करनी चाहिए, इसको थोड़ा कम ज़्यादा कर दें, इसको थोड़ा कम कर दें, we offer our expertise in good faith to help the government, because this is a very difficult time and all of us need to come together and utilize whatever expertise is available wherever. Or I think PIDE का बड़ा critical role है, and I wish that wish PIDE luck in doing its role. Thank you, ma'am. Just last few words from me. I think we have learned a lot from you, and I totally agree with you. Testing is the way forward, and also role of experts like you in facilitating the government is also very important. Given this epidemic is an evolving situation. Thank you so much. Thank you very much.